Good morning, everyone. I hope I am audible. Perfectly audible, sir. Perfectly Oh, audible. thank you so much. Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Very Good good morning, morning, sir. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good sir. morning. Sir. Hmm. Okay. So Good morning, we'll sir. be discussing uh, today Good morning, sir. about waste management, and we will be discussing it into two parts. First of all, we would know why sanitation is important, what are the hazards of poor sanitation, and then we will discuss among ourselves what can we do to improve the sanitation at our workplace, that is at institutes of higher education. So uh, usually when we enter into any city, we are greeted by these scenes, common scenes, uh, garbage lying, animals there, and this is the common sight. This is what uh, usually what happens when we enter into any city. Now, what is cleanliness? Cleanliness is both the abstract state of being clean and free from dirt, and the habit of achieving and maintaining that state. Now, it is not a one-time affair. Uh, we just don't have to achieve it, but also maintain that state. So it is very important that we have the habit of achieving and maintaining that state. Now, this idea of swachhata has been prevalent in all civilization across all times. And this concerns not only physical and mental health of human beings, but also our spiritual development. Mahatma Gandhi, who was striving for independence, he said that sanitation is more important than independence. Every religion talks about cleanliness. Bible has many rituals. Bhagavad Gita describes as one of the divine qualities which one must practice. Like if we are practicing cleanliness, we are close to divinity. And the Sanskrit word for cleanliness is shocham. The Holy Quran says, here he means Almighty, loves those who keep themselves pure and clean. So, like, these are the very important words. Cleanliness is seen as divinity, and the God loves those who keep themselves pure and clean. So, if we are keeping ourselves clean, if we are keeping our surroundings clean, then this means that we are close to divinity. Now, what is sanitation? Sanitation is a process of keeping ourselves free from dirt, infection, and diseases. How? By removing waste, trash, and garbage, or by washing ourselves, having safe drinking water, and all other things. Now, why sanitation is important? Sanitation is important because it is important for our health. As we will be just discussing shortly, that good sanitation can prevent us from getting many diseases, many serious diseases like
diarrhea, typhoid, we will be discussing. Then it's a good economic investment. When we practice good sanitation, our family saves money on healthcare and treatment. Importantly, this sanitation is also important for social development. If we are healthy, if our surrounding is clean, we will fall less sick and we are more likely to attend our work regularly. And this can help building a strong society. It also helps the environment. When we get rid of waste properly, we help to protect our water resources. It means that we don't have to smell any disgusting mess around us. And more importantly, it is achievable. Better sanitation is possible. How? It all starts with me and you. So, and this last thing, me and you, at the end of the session, we will be asking ourselves whether we will be able to achieve or not. Now, what are the hazards of poor sanitation? The poor sanitation gives many infections, and it's an ideal opportunity to spread, uh, causing disease and illness in the community. The human excreta have been implicated in the transmission of many infectious diseases like cholera, typhoid, infectious hepatitis, polio. And if you see open defecation, open defecation means someone who is not using a sanitary latrine. If this is one of the important cause of hookworm infestation, and more than 200 million people are affected in India. You know, 1 gram, just 1 gram of feces contains 10 raised to the power 6 viruses, 10 raised to the power 5 bacteria, and thousands of parasitic cysts. So just 1 gram is full of viruses, bacteria, and cysts. Now, what are the disease burden due to poor sanitation? If you are able to see, most importantly, the diarrheals, cholera, diarrheas, and dysenteries. Typhoid, another important disease because of poor sanitation. Then we have all the worm infestations, encyclostomiosis, amoebiosis, roundworm infestation. They all are because of poor sanitation. Now, we all know what happens because of cholera and diarrhea. There is loss of fluid, and a person may die because of this. What does typhoid lead to? Typhoid can lead to death because of many organ being involved. Now, what can be the problem because of worm infestation? What is worm infestation? Anybody? What is worm infestation? Infection of worms. हाँ, पेट में कीड़े पड़ जाना, है ना? Yes. We have worms inside us, and these worms are parasites. They eat upon our nutrients. And one of the most common manifestation of worm infestation is anemia. Now, what is anemia? Anemia is reduction in hemoglobin. Now, what does this lead to? This lead to less oxygen supply. What will this lead to? Many problems. Like, most importantly, the person has reduced capacity to work.
poor concentration, easy fatigability, jaldi thak jata hai. Especially in children, what happens? They become poor learners. This helps their growth and immunity. So, if you can see, this disease burden is not only directly related to our health and death, but also it leads to less production, less productivity. Hepatitis A infection, it leads to jaundice. And people might say that I have been vaccinated against hepatitis. Yes, you might have been vaccinated, but that is for most probably because of hepatitis B. This is hepatitis A I am talking about. And this is an infectious hepatitis A because of poor sanitation. Now, the other important cause of poor sanitation could be vector-borne disease. If I remember correctly, we had a discussion on modes of disease transmission in our previous interaction. Yes, sir. So, what is a vector? Vector are anything like cockroach, housefly, mosquito, and these mosquitoes, these houseflies, they thrive on poor sanitation. And most important diseases which are transmitted because of vectors: malaria, dengue, filaria, Japanese encephalitis. So they are again indirectly because of poor sanitation. What type of poor sanitation? This type of poor sanitation. Poor sanitation, poor disposal of solid waste and liquid waste, including excreta. Fly and mosquito breed here. Poor housing, not worth for human living. No drainage system, most commonly in slums and urban areas. Now, we are also polluting our natural resources and suffering from diseases because there is some encouragement from water business, selling duplicate mineral water, marketing without quality mark. Now, if you just go back to my previous slide when I was talking about 1 gram of feces containing 10 raised to the power 6 viruses, 10 raised to the power 5 bacteria, this fly, house fly, this sits on that excreta, and from there it contaminates the food on which it sits again. So this is how disease are transmitted by housefly, like bacteria, viruses. They are transmitted from feces to our food. And fly is the best indicator of poor sanitation. If you are able to find a fly somewhere, this means that this area is not properly sanitized. It is in sanitary condition. And this is a famous agent of fecal-oral transmission. Then there are certain personal habits: public spitting and tuberculosis. TB, it has a devastating socio-economic cost in India, with over 450,000 people dying of tuberculosis each year. Every day, around 1,000 people are dying. And every 1 minute, a person is dying because of tuberculosis. Now, the estimated annual tuberculosis incidence is about
2.2 million, of which half are infectious. And how it is spread? It is spread by coughing and also by public spitting. So this is because of our public spitting. This is our personal problem. Just a second, I'm having a call. Just a minute. जी मैं क्लास ले रहा हूँ 10:30 बजे फ्री होऊंगा हाँ बताइए कुछ अंदाजा है कि इमरजेंसी मेडिसिन जिसमें नहीं था वो किस कैसेट में आया होगा किस लेटेस्ट कैसेट जी सॉरी आई होप आई एम ऑडिबल अगेन Yes, sir. okay so actually if you say also that you are in a class then people will not like they will keep on calling you they will keep on calling you and it breaks the rhythm actually okay so now how diseases are spread it's just a very small easy if you are able to see it way it has been shown here if you see if someone poops in open flies feed and lay egg there and if we don't wash our hands with water and soap after pooping germs remain on our hands or when these flies land on the food or if you touch food with unwashed hands germs are carried over and if someone's eat food with germs on or these germs enter our body and what happens we again we get sick so this is how usually diseases are spread and what are the two conditions which are promoting it? Anybody? What are the two conditions? What are the two conditions which are promoting this? Anyone? Sir, Anyone? please repeat. Poor What are the sanitation two and vector conditions breeding. which Poor are sanitation. promoting the spread of disease? Poor sanitation this and side. vector breeding places. Okay. Not washing hands properly. Yeah, one is not washing hand properly. And the other is environmental sanitation. If somebody is pooping outside. Like, now, do you know what is a sanitary latrine? Anyone? What is a sanitary latrine? We have heard this term. What do you mean by sanitary latrine? Anyone? See, what happens? The concept of sanitary latrine means that the excreta is not exposed to the environment directly. So either it is covered through something or there is a layer of water between the environment and the excreta. So this excreta is not in direct contact with the environment. So these flies or something cannot come directly into its contact. So now we know that this is how the diseases are spread, both because of a improper personal sanitation as well as environmental sanitation. Any guesses? What is this? Anyone? Sir, it's looking like fungi. It is looking like Bacterial culture. yeah, you know,
This is a hand impression of a 6-year-old child who has just come out from outside after playing. And this is what all these colorful things are, the microbes. So this is what our hands contain. If you remember my previous discussion, I had shown you a slide which had a hand on it and all the microbes which were there, and what were they causing. So now we know that sanitation is an important thing because it can lead to many diseases. Now, what is waste? Waste is any unwanted or useless material. Rubbish, trash, refuse, garbage, junk, any material unused and rejected as worthless or unwanted. So, a useless or profileless activity using or expanding or consuming thoughtless or careless. So anything which is unwanted is waste. So what are the types of waste? Waste can be solid waste. It can be liquid or gaseous waste, animal byproducts, biodegradable waste, chemical waste, commercial waste, biomedical waste, or bulky waste. Now, what is a solid waste? It is non-liquid, non-soluble materials ranging from municipal garbage to industrial wastes that contain complex and sometimes hazardous substance. This solid waste include this garbage, rubbish, demolition products, sewage treatment residue, dead animals, manure, and other discarded materials. So per capita solid waste output in India is somewhere around 250 grams to 2.5 kilogram per day. Now, what are the sources? Agriculture activity, fisheries, household activities, commerce, and industry. Any activity which we are doing is mostly bringing out wastes. Now, these wastes are of three types: household waste as municipal waste, industrial waste as hazardous waste, and we have biomedical waste or hospital waste as infectious waste. So, municipal solid waste consists of household waste, construction and demolition debris, sanitation residues, or waste from streets. Now, because of rising urbanization and changing in lifestyle and food habits, the amount of municipal solid waste has been increasing and its composition is changing. So what are the changes in our lifestyle and food habits? Anyone Intake of of us? more processed foods. So what will happen Packed because food and extensive use of polythene. Mhm. This is the Okay. main cause. Okay. डिस्पोजेबल जो Food चीजें यूज habits. करते हैं जैसे हम ज्यादा Yes, someone is. जी सर, सर जो पॉलीथीन में ले आकर के भोजन किया जाता है या पॉलीथीन के बोतल में पानी पिया जाता है तो एक केमिकल उसमें पाया जाता है ईडीसी।
इंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल जो होता है, जो माइंड के, मस्तिष्क के ग्रे सेल्स के लिए नुकसानदायक होता है सर बहुत। ओके। और पिज्जा, बर्गर इत्यादि जो फास्ट फूड इत्यादि है, वो हेल्थ के लिए बहुत सारे इश्यूज पैदा करते हैं, समस्या पैदा करते हैं सर। तो ये सारी चीजें हैं सर। दो चीजें हो गई सर। एक तो आपने पिछली क्लास वाली बात कर ली, हम तो इस बार की बताइए फूड हैबिट से वेस्ट कैसे बढ़ रहा है। वो तो हमारा वेस्ट बढ़ रहा है उससे ना, वो WAIST वाला वेस्ट है। जी 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 सर, है ना। तो खाने की चीजें जो हम ले आते हैं सर, छिलके वगैरह WAST वाली यहाँ पर, जी जी, छिलके वगैरह यहाँ वहाँ फेंक देते हैं सर, उसको अच्छे से उसका समुचित पहले भी फेंक वो देते नहीं थे। करते सर। FMCG का ज्यादा यूज करते हैं। जी सर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा यूज करते हैं, जो पैकेज्ड होता है यूजुअली। सर इसकी वजह समय से से वेस्ट नहीं बढ़ खाना। जाता है। जी सर। एक बस समय एक चीज मैं पहले आपसे कह दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट WAIST वाला वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट WASTE वाला वेस्ट। तो वो जो चीजें ना, समय से नहीं खाना और फास्ट फूड खाने से हमारा वेस्ट वो वाला बढ़ रहा है, WAIST वाला। यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं सर। एक तो ये है कि प्रोडक्शन अगर हाईली मतलब बहुत ज्यादा हो गया है और उसका सही से पैकेज वाली चीजें खाएंगे सर, तो वेस्ट तो सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वेस्ट बहुत सारा होता है, जो मतलब ईटिंग वेस्टेज। आउटसाइड, जी है ना, स्ट्रीट फूड्स बढ़ गए। जी जी। Someone is very rightly saying packaged foods. All that packaged foods is coming with plastic wastes or paper and other things, है ना। So what is happening? जैसे अभी इस समय, हाँ बताइए बताइए सर जैसे इस समय अभी एक फूड हैबिट्स जो पैकेजिंग हैबिट चली है, जैसे सर मैं एड्स वगैरह में तो देखता हूँ कि नारियल का पानी है, तो नारियल के पानी को, नारियल को काट के क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक के गिलास में डाल के फिर उसको सील पैक करके फिर उसको सेल किया जाता है। जी। तो नेचुरल पैकेजिंग को हटाकर आर्टिफिशियल पैकेजिंग करना, ये सबसे खतरनाक डेंजरस रीजन है कि जो हमारे वेस्ट को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जैसे सर मक्के वक्के का भी मैं देखता हूँ कि मक्के में क्या होता है कि उसका जो नेचुरल पैकिंग होता है, जो पत्ते होते हैं, वो सबसे बेस्ट है। बट पत्तों को हटाकर पॉलिथीन लगाकर उसके ऊपर सील टेप लगाकर ये 8 रुपए का है, 10 रुपए का है, ये भी सर बहुत सॉलिड रीजन होता है जो सॉरी जो वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। दिस इज व्हाट I wanted to emphasize. So this is the changing food habits. Now, this is the characterization of municipal solid waste. Most of the solid waste is paper or paperboard, the yard waste, metals, plastic, our food wastes, glass, wood, and all these things. So these are our solid waste. Now, hazardous waste is considered hazardous as they contain toxic substances. They can be corrosive, they can be highly inflammable or explosive. In the industrial sector, most of the generators of hazardous waste are metal, chemical, paper, pesticide, dye, and rubber good industries. And direct exposure to chemicals in hazardous waste, such as mercury or cyanide, can be fatal. It can lead to death. Now, hospital waste or biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or in research activities. Now, this can include waste like sharp waste, like syringes, needles, pathological waste, pharmaceutical waste, like drugs,
genotoxic waste, chemical waste, and sometimes even radioactive waste. Now, what are the effects of solid waste? If this is not collected and allowed to accumulate, they may create unsanitary conditions. And this may lead to epidemic outbreaks. And poor sanitation has been implicated to many outbreaks. The cholera outbreaks, diarrheal outbreaks, they are usually because of these unsanitary conditions. Now, if this solid waste is not properly handled, there is a health hazard for workers who come in direct contact with the waste. Then there are environmental impact. If the solid wastes are not treated properly, decomposition and putrefaction may take place. And this can lead to intolerable smell. So again, a hazard. So now we know how waste is generated, and we know how it is causing directly or indirectly to our health. Now we'll come to the second part, that how we as teachers, we can make our campus swachh. Okay, so first of all, please remember, the environment, we have not inherited it from our forefathers. Rather, we have borrowed it from our children. Now, what is a green campus? As per the UGC's notification, a green campus is a higher education community with optimum land use, environmental planning, and resource management. So there are three things. It's a community with optimum land use, environmental planning, and resource management, like improving energy efficiency, conserving resources, enhancing environmental quality, including habitat preservation, healthy living environment, use of renewable energy, and management of waste and water recycling. The buildings within the campus should be based on green building concepts to the extent possible. So this is the definition of green campus. It is just not planting trees. It is more than that. It is beyond planting trees. Yes, planting trees is important. It is beyond planting trees in the sense that we have to have environmental planning and resource management. Now, universities mirrors the green institutions, the principle, and endeavors to extend learning beyond the classroom and to inculcate and develop responsible attitudes, habits, and lasting commitment to Swachhata, be at home, campus, or in the community. Now, what are the practices? Now, whatever I am speaking now is from MHRD booklet. So you have a reference for it. We can always go and check it. Now, these practices include sanitation and hygiene, waste and water management, green cover, and energy conservation. Now, what all a higher education institution or university can do? Because we all are working
in higher education? Let's hear from someone what we can do. Anyone? Planting trees in the campus, Okay, planting trees. and means we have a nature's club in our college. Okay. That is an initiative. Plastic free campus. Plastic free campus. Okay. Sir, recycling process. Okay, recycling. See, Rainwater harvesting system rainwater and harvesting. protection of natural habitats of Mhm. birds and small animals. सर Solar इन सबसे awareness campaign. इम्पोर्टेंट सर इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लेना और दूसरों को एजुकेट करना। ये तो सब तरीके हम जानते हैं, इस तरीके से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना वो सबसे बड़ा टास्क होता है। एक स्टूडेंट को बोलना, हम हमारे अंदर खुद के अंदर वो चीज आना कि इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करना है। आपने तो हमारी आसानी हमारे लिए बहुत कर दी और यही हमको डिस्कस करना है। थैंक यू सर। नाउ as sir said, first of all we have to build a consensus on the need for maintaining a clean and green campus among campus leaders, such as at student level, faculty level, and at campus level. Then facilitate design of specific interventions for making the campus clean and green by following the international standards, and also monitor the existing environmental performance. So we should ignite the spirit, and this should be from the top level: vice chancellors, directors, principals, and dean faculty provide resources for respective faculty to integrate Swachhta and sustainable development aspects and perspective into their existing courses. Develop and launch faculty training program. Hold seminars on Swachhta. Include fieldwork and demonstration in the teaching method. Dean students welfare. Work with the counseling team in creating and implementing the orientation program for the first timers. And there should be the rules which have to be explained, which have to be followed for Swachh campus. We may include NSS coordinator. They can head the Swachhta team. Look into the overall aspect of Swachh campus initiative. Involve the NSS members in the Swachh initiative. Survey the campus fortnightly. Sometimes conduct a surprise visit and motivate students for smooth conduct of Swachh campus initiative. Now, if you see, there should be a networking for Swachhta. One person will not be able to do it. So we have campus officials like VC, deans, head of the departments or trustees, and we can have a Swachh admin group like facility managers. We can have recycling coordinators, energy managers, and then Swachh faculty like professors, academic program administrators, student teams which are enthusiastic students forming an energetic team for innovative campus reforms. Now, if you see, the arrows are pointing towards each other. It's always a give and take thing. And then we can have alliances with residents, funding agencies, non-profit organizations,
government officials or religious leaders, and this should be there should be a constant communication. So then only we can be able to do. Now, sanitation and hygiene policy. What should be so the institution should have a maintenance of cleanliness and institutionalization of monitoring process. Two things. Without monitoring, we will not be able to know whether the policy which we have framed for sanitation and hygiene is being done properly or not. Water conservation policy, very important aspect. Optimum use of water. Reuse of treated water. Water saving appliances and water recycling. Now, what can be done for optimum use of water? What is optimum use of water? सर जैसे घर में हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब सब्जी फल वगैरह को धोने के लिए, तो उस पानी को हम वेस्ट ना करें, उसको पौधों में डाल दें। उसी तरह से कई बार मतलब कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े धुलने का जो बाद में पानी ऐसा बचा है कि जो बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, तो उसको जैसे फ्लोर साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कई ऑप्शन किए जा सकते हैं। सर आरओ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको भी यूज कर सकते हैं। सर मैं भी कुछ बोलूं। बिल्कुल सर ने जो कहा, तो वाटर सेविंग अप्लायंसेस इसमें क्या होंगे? आरओ इज नॉट अ वाटर सेविंग अप्लायंस। नहीं, उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है सर। So when do you use RO? क्या हम सब लोगों को RO यूज करना चाहिए? लेकिन सर सर्वे तो कहता है, डेटा कहता है कि इंडिया में 80% पोल्यूटेड वाटर है। कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ज्यादा है तो RO चाहिए, रिवर्स ऑक्सीडेशन पर। नहीं, पॉल्यूशन के लिए है या किसी और चीज के लिए RO ज्यादा इस्तेमाल होता है? किसी और चीजों के लिए सर वाटर प्यूरिफायर के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं। वाटर प्यूरिफायर कितने टाइप के होते हैं? नहीं इंडेक्स होता है एक ना, कंटामिनेशन इंडेक्स होता है, मतलब पार्टिकल्स कितना है। It is used as a status symbol also. Even अगर आप villages में जाएं जहाँ pollution का नहीं है, आप नलके का पानी पी सकते हैं, but still people are using RO. कोई बताना चाहेगा? मैं मैडम हैवी मेटल्स आएंगी उसके लिए नॉट पॉल्यूटेड वाटर। एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जनरली यूज होता है। सर TDS कम करने के लिए फिल्टर यूज किया जाता है। ये TDS क्या होता है? सर टोटल सॉलिड डिसॉल्व। अच्छा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। सर ये डिपेंड करता है, कुछ एरिया में वाटर जो जैसे में लेड वगैरह काफी पाया जाता है, जैसे मेरे एरिया में काफी पोल्यूटेड आता है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग जो RO लगाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह लगाया जाए। कुछ हमारे पास हिली एरिया है सर, वहाँ इसकी जरूरत नहीं है कि वहाँ जो वाटर है काफी वो अच्छी क्वालिटी का आता है वो, क्योंकि वहाँ पे जो पंप लगा रखे हैं वो 400-500 फीट वो उनकी डेप्थ है जहाँ से पानी आता है, इसलिए वो पानी अच्छा है पीने के लिए। तो what is the consensus among us? बेस्ड ऑन वाटर क्वालिटी हमें RO यूज करना है। हाँ? When should we use reverse osmosis? So hard water और TDS काउंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर बहुत ज्यादा है तो उसका तो वैल्यू क्या होता है। हम लोग TDS काउंट पहले देखते हैं? यस सर। यस सर। लगाते हैं या हम क्या कहते हैं खुद से ही कर लेते हैं? No sir, the RO contain and submerged device in the water and the TDS is not. पानी के कलर या टेस्ट में कोई बदलाव हो तब
देख सकते हैं आरओ का ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वक्त लिया आप लोगों का इसे। हाउ मेनी ऑफ अस आर यूजिंग आरओ एट आवर होम्स? मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, most sir, Yes, sir. Yes, I'm sir. not. Yes, sir. Yes, sir. Most of us are using. I am not using. Why, sir? I am also good. Sir, we are also not using in our village. सर हम लोग भी नहीं चलाते I am not residing in a village. See, what Okay, sir. there are many different ways by which we can purify water. Okay. One, So most your of the village time, is you know what happens? Many people at our places, or rather most of the people are using RO, but I am not using it. Don't think that it is because that I am discussing water conservation, that's why I am not using it. But I so don't, what is reason of it कि आप use मैं तो आपसे उल्टा पूछूंगा ना कि आप क्यों यूज कर रहे हो? सर अलीगढ़ के पास तो जितने भी आरओ लगाने आते हैं वो हमेशा मना करते हैं कोई जरूरत नहीं है। और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, शायद आप अलीगढ़ के पास ही रहते होंगे। हाँ, अलीगढ़ में ही रहते हैं। सर कौन सी विलेज में? अभी आपने बोला था ना कि हमने कहा विलेज में नहीं रहते हैं। ओके सर, अलीगढ़ में किस जगह सर? हम तो कैंपस में रहते हैं। तो सर आप मेरे ही नियर अबाउट रहते हैं। मैं भी पास ही में रहती हूँ, सेंटर पॉइंट सर। अच्छा मैम, देखिए ऐसा है कि हर चीज का इंडिकेशन होता है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे किसी हमारे में से किसी टीचर ने कहा कि वहां ज्यादा यूज होता है जहां पे हम लोगों को हार्ड वाटर हो, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका यूज हम लोग वहीं करते हैं जहां पे टीडीएस की प्रॉब्लम है ना। तो इसमें आप लोग क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वाटर को प्यूरिफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। क्लोरिनेशन एक तरीका है, वाटर को बॉयल करना एक तरीका है, सेडिमेंटेशन करना एक तरीका है, फिल्टरेशन करना एक तरीका है। तो बेसिकली जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर्स यूज कर रहे हैं ये फिल्टरेशन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, या फिर यूवी लाइट यूज कर रहे हैं। ये जो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, उस एक सबसे मतलब ये सारी चीजें प्लस रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो टीडीएस को भी कम कर रहा है। इसलिए लोग सोचते हैं कि बेस्ट चीज क्यों ना यूज करें, तो हमने जो है आरओ यूज करना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम विथ आरओ इज दैट ये वाटर का बहुत ज्यादा वेस्टेज करती है। Can you do you know how much water is being wasted for 1 liter of water? और सर 3 times, एक sir. बात 3 times. Almost 3 times. ये मुझको और एक हाँ बताइए कुछ कह बात रहा है। बोलना चाहूँ सर। आपने जी। सुना है कि सर ये आरओ वाटर जो होता है सर, वो जो एसेंशियल मिनरल्स है वो भी निकल देता है सर उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ऐसा बहुत कोई मतलब स्टडीज ने प्रूव नहीं किया है ना सर। तो अच्छा, इसलिए अच्छा। हमारा कहना इस टाइम मतलब सही नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म से उस चीज को। ये लोगों के स्पेकुलेशंस हैं लेकिन अभी किसी स्टडी ने इसको प्रूव नहीं किया है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, प्लीज सर। सर जैसे हमारे एरिया में बिहार में 15 फीट पे है ना वाटर लेवल मिल जाता है। अच्छा बस 15 फीट पे। ओके। लेकिन क्या सर 15 फीट पे जो पानी मिल रहा है या 20 फीट या 25 फीट पे वो पानी पीने के लिए सही है या डेप्थ में जाना चाहिए? और कोई ज्योग्राफी का है यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम ज्योग्राफी हियर?
देखिए होता क्या है ना, जो हमारा सॉइल है उसकी लेयर्स होती हैं। एक बीच में इम्परवियस लेयर होती है। देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको कहां से बता रहा हूं कि कौन सा हैंडपंप सैनिटरी होता है और कौन सा नहीं होता है। जो सैनिटरी हैंडपंप वो होता है कि जो इम्परवियस लेयर के नीचे से पानी लाए, और ये इम्परवियस लेयर काफी नीचे होती है, एटलीस्ट 15 फीट पे नहीं होती है। तो होता क्या है कि जो आसपास का जो कॉन्टेमिनेंट है वो भी नीचे वाटर में आ जाता है। अगर हम डीप बोर करते हैं तो हमको प्योर वाटर मिलता है, फ्री फ्रॉम दीज लोकल पॉल्यूटेंट्स। ओके सर इसी में ऐड कर रहे हैं सर, हाँ, एक हमने जब बोर करवाया उसमें 40 फीट पे, तो उसमें बहुत ज्यादा आयरन आने लगा, सब कुछ लाल होने लगा था। तो फिर मैंने उसको और थोड़ा ऊपर कर दिया 25 फीट पे, तो फिर पानी एकदम बिल्कुल साफ है, मीठा है। देखिए साफ जो होता है ये हम लोगों को आंखों से जो दिख रहा है वो साफ नहीं है ना। इसीलिए लोग जो है फिल्टरेशन यूज करते हैं। तो मेरा मतलब आई डोंट नो अबाउट योर एरिया, बट यूजुअली the deeper the hand pump, the more safe the water is. Okay, this is this is the usual dictum. Okay, now as somebody told, rainwater harvesting, it is again something which all the new buildings are doing it, and we are harvesting rainwater. Now, so this was about water. Waste management policy. From our primary classes, we are taught about 3 R's: reduce, reuse, and recycle. We have 2 more R, that is refuse and regenerate. So banning all plastic disposable items from the campus could be the first step. By this, we can reduce the plastic waste. What do you mean by refuse? Refuse means that we don't buy things or we don't use things which are single-use plastics, or things like which are not good for environment. What are the examples of single-use plastics? The shopping bags, they are the single-use plastic. So we refuse them. Now remember, when we are refusing it, it is not in the malls where they will ask you, do you need a shopping bag? And you will politely say no. Why? Because they will charge you 20 rupees or 15 rupees. You have to refuse when you are buying the vegetables, where you will ask that please make it two polythene, because one may get torn off and he will not be charging you any money. So refuse is that we have to refuse single-use plastic. How many of us are using pens in which we are putting refills? Because now we are using pens which are like single-use, using it and throwing it away. Anyone who is still using shopping for the refills and all? I hope there might be some people. No, none. Not है ना? We all are. sir, sometime. Yeah. सब लोग यूज एंड थ्रो वाले पेन यूज कर रहे हैं। Yes, sir. तो ये दिस इज अगेन लाइक दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीयूज, है ना? Now this is again leading to lots. Then the shampoo sachets,
The jams and sausages sachets, they are single-use plastics. So we have to avoid using single-use plastics like the water containers, the straws, all these have to be avoided. Now, the university should have energy conservation policy. How? Introduction of solar energy and reduction in energy consumption through technologies and management process. So what we can do is that energy conservation, we can minimize the use of electricity. When we are not sitting in the room, we can keep our air conditions off. We can switch off our fans, use LED rather than the old ones. We don't overcharge our batteries. Then the other thing is solar. You will be happy to know that AMU is one of the largest solar power project among all academic institutions in the country. And we are having generating around 6.5 megawatts of energy from solar. We are using solar rooftops. Then greening policy. Growing endemic and endangered species of trees covering at least 30% of the land area. Like, we should plant trees, but the guideline says that it's better to plant trees which are endemic, means which are local there, and are on the verge of extinction or they are endangered. So we will be not only getting these trees, would be getting a good ecosystem for that. So this is the greening policy. The student activities, they should be told and promoted that their programs, whatever these fates, these fresher parties or farewell parties, they should maintain Swachhta during their programs, because this is their formative years of life. And universities and higher education institutions generally have vast land areas with substantial scope for harvesting rainwater, maintaining green cover, and compost yards. Therefore, the universities can act as lung spaces for the city. Now, what are the steps to Swachh campus? Now, these are again from the MHRD booklet. Conduct a waste survey, plan and prepare. We should have facility, equipment, and logistics. I'll be talking about waste segregation just now. We know about the 5 R's: refuse, reuse, recycle, recover, and regenerate. Waste treatment and management, and signage, hoardings, and planting tree samplings. Welfare of the sanitation worker is very important because they will be helping us in maintaining the campus clean. And monitoring and correctiveness is another step. Now, segregation of waste. If you remember, when we were talking about waste, I had classified waste into 3 parts. One was the municipal waste, second was hazardous waste, and third was hospital waste or infectious waste or biomedical waste. Now, here I'm not using that concept only. We are having 2 or 3 types of waste. One is the municipal waste, which
is biodegradable, and the other form of municipal waste is non-biodegradable. And then a third one, which can be hazardous waste. So all the three waste has to be segregated at the time of production. अपने घर में ही हमको इसको segregate करना है. If this is in order, this means that the waste is managed properly. We should not hand over the sanitation workers waste which is not segregated. वो जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उनको हमें segregate करके waste देना है. So we can use different color bins, है ना? We can use different color bins. So what are the different types of waste? Wet waste, dry waste, and hazardous waste. So wet waste is vegetable peels, fruit peels, rotten fruits and vegetables, leftover food, coconut fiber, spoiled spices, meat and non-veg remains, all these garden shrubs, these are all wet waste. Now this wet waste can be composted. If you are residing in a rural area, you can dig a pit and put all these things into it and you get a manure. If you are residing in a colony, most probably you will have some space there. You can all put all these vegetables, fruits, leftover foods into it, and this will be your compost. The dry waste, that is soap covers, empty shampoo bottles, milk covers, butter wrappers, used mop clothes, broken stationaries like pens, pencils, and empty cans of floor cleaners, all this can be handed over to the municipal handler. वो जो आता है ना म्यूजिक बजाता हुआ, उसको हमने ये ड्राई वेस्ट दे दिया. और कौन सा वेस्ट दे दिया? हैजार्डस वेस्ट. व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट? Mosquito repellents, expired medicine, children diapers, used razor blades, old batteries, all these things can be given to this. But remember, this has to be segregated. Otherwise, it is simply impossible to segregate at the collection level. So what will happen? If it is not segregated properly, it will all become hazardous waste. Now, we have e-waste also. Cell phones, digital cameras, calculators, batteries, faxes, laptops, all these are e-waste. Okay, so the wet waste, especially from kitchen, vegetable refuses, they can be used for composting, which I had just discussed. Anybody who is using this method? Anyone? No, none of us are using. नहीं जी सर, हमारा जो मैं दार्जिलिंग से हूँ सर. जी सर. तो हमारे कॉलेज में अभी ग्रीन अवार्ड भी मिला है हमारे कॉलेज, साउथफील्ड कॉलेज को. अरे कांग्रेचुलेशन सर. हाँ सर, थैंक यू सर. तो हमारा कॉलेज में ये बहुत सारे ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का डिग्रेबल, नॉन डिग्रेबल जो है वो अलग से रखते हैं. और डस्टबिन भी हमारा जो हमारे यहाँ तो बैम्बू मिलता है ना सर, छोटा बैम्बू, उसका बास्केट बनाते हैं, उसके बास्केट में रखकर डिग्रेबल और नॉन डिग्रेबल होता है, और उसको ही फिर वर्मी कंपोस्ट जो है कंपोस्ट पीट बनाते हैं. तो इसी कंपोस्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर होता है, जो आपको तो मालूम है, जो ऑर्किड होता है ना, वो स्टूडेंट लोग वो कल्टीवेशन करता है. और अभी तो मशरूम का भी कर रहा है कॉलेज में. ओके.
और जो अभी हमारा एक दोस्त ने कहा कि उसके यहाँ नेचर क्लब है, हमारा यहाँ भी नेचर क्लब है, तो हम का वो प्लांटेशन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट जो होता है वो स्टूडेंट वो वहाँ पर करता है। लेकिन एक्चुअली हमारा तो आर्ट्स कॉलेज है, फिर भी हमारा जो सर लोग है वो मेडिसिनल प्लांट को लेकर भी उनको अवेयरनेस देता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके। तो एनएसएस का टीम भी है, और एनएसएस का टीम भी जो हमारे यहाँ तो पहाड़ पर जो ट्रैकिंग रूट होता है ना सर, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट आकर वो प्लास्टिक का वो सब वो वहाँ पर गंदगी करता है, तो वो सब इकट्ठा करके लेकर फिर वो रेगुलर रूप से जो म्यूनिसिपैलिटी का जो है उसको सौंप देता है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉलेज में वो भी है हमारे पास। और ये एनर्जी सोर्स को बचाने के लिए हमारे यहाँ 2 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा हुआ है। वेरी तो गुड। कोशिश कर रहा है कि नहीं, it's a very good thing, sir. We should all appreciate. हाँ सर। Like the college, which is like if you in our university also, yes, we have at many places this composting. Even at the academic staff college, they are also doing this. So, like what I am trying to say is that we all can do these things. So, converting food waste into methane gas, especially from hostels and dining hall waste, is possible. So this is one of the widely used method of anaerobic composting. सर Dry अभी waste. 2-3 साल पहले से हमारा एपीकल्चर जो है ना, मोरी पालन, एपीकल्चर भी कर रहा है सर। तो 3-4 वहां पर रखा हुआ है, उसका भी उसका हनी निकालता है वो एनएसएस का जो स्टूडेंट लोग वो भी बिक्री के लिए रखता है खेत में। So we have organic honey. हाँ सर ऑर्गेनिक। हाँ Okay, thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा। So dry waste has to be sent for incineration in an eco-friendly incinerator. And hazardous waste, it's better that this is to find a good operator of common facility for treatment of hazardous waste and dispose hazardous waste through such operators. The e-waste, usually at our campus, we are following the extended producer responsibility. So what does it do? Under EPR, manufacturers of computers and other electronic items take back end of life product. जैसे हमारा, if the computer gets old, now it's not working, the company through which we have bought, it takes back. It's at the university level, not at individual level. So institutions can use such facility for disposal of e-waste, which is very important. Now, without student participation, basing on personal interaction, students can given the assignment on waste management, good sanitation and hygiene practices, water and water conservation, campus greenery, or energy conservation. Like we have water and electric monitors. They will check that students, voluntary basis, on rotation wise, they will check that people are not misusing water. All the taps are properly leak proof, and there is no leakage. This is all like the students are doing. So it is something like they feel good about it, and they follow this habit when they go to their houses also. Now, students are usually asked to be active on social media. They are active on social media, but for Swachhta also. And they are also sensitized what immediate actions can be done. So there are some days on which we can use these days for talking about our environment. World Wetland Days,
World Water Day on March 22, Earth Day on April 22, World Environment Day usually falls in summer vacations. है ना? So all these days can be used for. कल कौन सा day है? What is any day tomorrow? Wednesday. Huh? Friday. Wednesday. Women's Women's Somebody Day. said it's Friday. Women's Day, Yes, sir. Women's. Okay. Now, Women's Day. yeah. So, Government of India to have some good competition among themselves have started Swachh Campus ranking, and many colleges are participating into it, and because of this, the campus are getting cleaner and greener day by day. This is a pictorial view of our campus. Usually we enter through this gate. This is Stretchy Hall, where we have our 26th January and 15th August parade. We are using these machines for cleaning the campus. Then segregation. I told you about welfare of the sanitary workers. This person is just going for vector control, that is fogging. So equipments, manpower, their health, all these things have to be taken into consideration. So what current interventions can be done? First is creating health awareness. Safe water, safe food, and safe environment. Encourage hand washing practices in the community, and abolishing public defecation and urination and spitting. All the three things, not only public defecation and urination, but also spitting. Do you remember that spitting was one of the ways by which we are transmitting tuberculosis? And the role of citizen is very important. Like reduction in waste, minimizing littering and pollution will pave way for a healthier and productive state and mind. And this can only be done by us. So we have brand ambassadors. They can be any one of us. We teachers are also brand ambassadors for our students. So public awareness should be created. Littering of solid waste should be prohibited in cities, towns, and urban areas. And more house-to-house collecting solid waste should be done. The collection bins must have large enough capacity. The municipal authorities should maintain the storage facility to avoid unhygienic and unsanitary conditions. And it is advisable to move from open dumping to sanitary landfills in a phased manner. The colleges and universities are temples of learnings, and we have important role to play in the development of this attitude. The students in institutions of higher learning are of an impersonable age. They can be molded. So universities and colleges can become the best platform for imbibing these values, so as to transform them into motivated students. These are their formative years. So if we inculcate into them the healthy habits, the good habits, they can become a good citizens. So I think this is high time that we should not only follow good hygienic practices and waste management, but also are the brand ambassadors for them. Any questions? Any thing which
person like to add before we? Sir, can you explain the ways to dispose of the e-waste you're explaining? Sir, what I had done is, I told you is that, first of all, you have a very good voice, sir. In the last class also, I noticed it. So, Thank you, sir. Like I told you about the extended responsibility, producer responsibility. What we do is, sir, that we are buying it from those people who give this facility. I'm just pointing it on the screen. Extended producer responsibility. Here, the manufacturers of the computers and other electronics items, they take back the product which is at the end of life. So they recycle it, refurbish it, whatever they do like. So they charge you for this, but this is what we are doing it through our computer center. So then not only this, at individual level, sir, there are certain organizations, or rather people, who buy back, sometimes buy back, or you can also give them these products, and they they dismantle it, or they recycle these e-wastes. So where can we find those names, sir? Because I You can Google it for your area. Right, sir. You can Google it for your area. We have, like, our computer center does it, and we usually send it to the computer center people, and they manage it. Thank you, sir. Thanks. Oh, thank you. Thank you for your patient hearing. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. You cleared everything, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। Thank you, sir. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you, sir. निखिल सर, आप ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हूँ, बिल्कुल। थोड़ा सा चोट लगी है कान की तरफ, लेकिन ठीक हूँ। ओके। अरे इतना बड़ा काम किया, ट्रक को पलट दिया आपने। हाँ सर। कैसे चोट लगी? क्या सर, वो हुआ टाटा सर? की कौन सी कार थी? टाटा पंच। अरे ट्रक वाला ठीक है कि नहीं निखिल सर? चलिए सर, आप बहुत ज्यादा जीवन चोट तो नहीं है? ट्रक वाला ठीक है कि नहीं? अरे निखिल सर सर, चारों के से ये मार सके ना कोई। अरे जीवन सर यहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, निखिल जी बहादुर आदमी, ट्रक को पलट दिया। निखिल सर से टकरा के ट्रक पलट गया, बताइए। ट्रक वाला सही सलामत है कि नहीं? वहां भी ज्यादा रहती हो। अखबार में न्यूज निकलवाई कि नहीं, ये बताओ पहले आपने, क्या न्यूज क्या थी आज की? पंच ने मारी ट्रक को टक्कर। बाल बाल बच्चे। ट्रक को टक्कर मारी और ट्रक पलट गया। बाल बाल के पटना के प्रोफेसर। तो ट्रक का सर बुरा भला हो गया। पंच की दाल बढ़ गई। बाकी निखिल सर आप सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो सब मुख्य सर यही है कि आप सुरक्षित हैं। हाँ निखिल सर, ये अच्छी चीज है, अच्छी रहेंगी। आपका सही ठीक रहना ही सबसे बेहतर है। सभी लोग स्वस्थ रहे सर, बस यही है, और क्या। यकीन नहीं ठीक हुआ है, सबके साथ है सर। बस बस बस। हाँ, अपना ध्यान रखिए निखिल जी, है ना? आप तो बहादुर आदमी हैं, बहुत बहादुर हैं। नहीं बहादुर नहीं है, कमजोर हैं। दुआ करते रहिए।
देखिए FIP के बाद ग्रुप आप लोग क्विट मत करिएगा। नहीं, उसके बाद तो ग्रुप शुरू। बिल्कुल ग्रुप रहना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत से ग्रुप बनवाया है। बहुत मेहनत तो लगती है मैम, सबको एक एक करके जोड़ना। हाँ, ग्रुप में देखिए कितनी डाइवर्सिटीज मिलेगी आपको, है पूरा भारत है उसमें। डाइवर्सिटी है और सही मायने में सर लगता है कि वो बैचिया वाली फीलिंग आती है जो फ्रेंडशिप होती है बैच में, क्योंकि यूजुअली ऐसे ग्रुप मिलते नहीं है। इतने सारे फोन आए, इतने सारे विशेष आए, तो लगा कि हाँ यही अच्छा ग्रुप है। सर कान किधर साइड लगी, इधर साइड किधर लगी है? दिखाइए ऑब्जर्वेशन कराइए पहले। निखिल सर किधर लगी आपके कान पे? फोटो भेज दो। यहाँ लगी, शीशे से लगती है। ममता मैम, अगर आरा का पेठा मिल जाए निखिल सर को अभी तो तुरंत ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, भिजवा देते हैं, ऑनलाइन करवा देते हैं, ऑनलाइन हो जाएगा। एमओ जी पटना में पंची वाला भिजवाइएगा। सर आपको मंगवाएं, बेल्ट लगाए रहे होंगे सर ना, तभी इतनी सदर बाजार में जो शॉप है वहां से भिजवाइए। बहुत खतरनाक सदर बाजार के आसपास ही रहते हैं सर हम, वहाँ हमें खुद भी हमें सब में ढूंढना हमें मुश्किल हो गया है। हम सर यहाँ पे सर उसके पास रहते हैं। क्या खिला रहे हैं सब? निखिल जी प्लेट आइए पंची वाला। क्या? हाँ खा लिया, ये खा लिया। हाँ पंची मेरे घर पास में है, यहाँ से तो ला सकते। थैंक यू। सर आइए मिलते हैं 11 बजे। बहुत फेमस है। हाँ, बिहार का ठेको के अपना पता भेज दूंगा। निखिल सर आप हमें ठेकुआ भेज दीजिए, हम आपको यहाँ का पंची पेठा भेजते हैं। पक्का आके खिलाएंगे आपको। बिल्कुल सर, बहुत वेलकम है। थैंक यू। अभी सर आप कहाँ पे रहते हैं? 11 बजने वाले। मैं पटना में रहता हूँ। नहीं अवनी सर। अच्छा, अवनीश सर तो रहते हैं मेरे ख्याल से मैं जौनपुर में रहता हूँ। जौनपुर सिटी है। कहाँ पे सर? जौनपुर आजमगढ़ में पोस्टिंग है, जो रहता जौनपुर में हूँ। अच्छा जौनपुर। अच्छा यूपी में ही जौनपुर है। दोनों जगह कब्जा किए हैं। चलिए सर, बनास का पड़ोसी शहर है। निखिल सर सर अब सब लोग गए तो एग्जाम की तैयारी करने या करना चाहिए? ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी करते हैं सर। बाय। एग्जाम को में कैसे क्या करना है अब आगे की, उस पर तो किसी ने कोई बात नहीं की। अब मध्यान्ह आएंगे तो बताएंगे सर, मुझे लगता है 5 मिनट इंट्रोड्यूस करेंगे वो। सर रणनीति तैयार है। अभी यहाँ कुछ बात मत कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है अपना। रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। और सर जो हम लोग बातें करते हैं ना, वो यूट्यूब पे अपलोड भी हुई है। मैंने तो एक दिन देखा था सारा सब लोग जो हम लोग लास्ट में चैट करते हैं, तो वो दिखता है ये जो चिटचैट है ये केवल इसी बैच में, दूसरे वाले बैच में तो सब बड़े शांति से रहते हैं। वो लोग आपस में इतने नहीं पाए ना, लोग आपस में पढ़ाकू लोग हैं भाई। जी अवनीश सर आप यहाँ बिना करके ग्रुप पे बात करते हैं, यहाँ अभी सही नहीं है। आजम करते हैं आप? अवनीश सर, सॉरी सर, अवनीश सर आप कहाँ से हैं? आजमगढ़? सर मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर। अच्छा जौनपुर। पोस्टिंग मेरी आजमगढ़ में है। किस कॉलेज में है सर आप? सर मेरा कॉलेज का नाम है जीएसटी पीजी कॉलेज। जीएसटी पीजी कॉलेज। अच्छा नाम सर बड़ा अच्छा नाम है जीएसटी। कितना परसेंट है सर? जी यार एक बार में कितना परसेंट है? क्या सर कितना परसेंट है? जीएसटी कॉलेज में। सर जो आप लोग का है वही मेरा भी है। अवनीश जी कहाँ पे है कॉलेज आप? आजमगढ़ में? सर ये आजमगढ़ जौनपुर का जो बॉर्डर है, बरदा करके है, बरदा गांव है और टाउन है। बरदा देख रहा हूँ। बस बरदा डिग्री कॉलेज से नाम से वो पॉपुलर है, पर उसका नाम यही है गांधी स्मारक त्रिवेणी, तो उसको जीएसटी पीजी कॉलेज हम लोग कहते हैं। अच्छा वो राय साहब उसी में है, पॉलिटिकल साइंस वाले? अजी प्रोफेसर अजित राय सर? हाँ अजित जी। हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ ही है वो।
मैं डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में हूँ। अरे वाह, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। मैं लालगंज से हूँ, लालगंज आजमगढ़, और अच्छा, पोस्टेड तो बस्ती में हूँ। लालगंज तो हमारे कॉलेज से मुझे लगता है आपके यहाँ 15 किलोमीटर क्या सब्जेक्ट है मैडम आपका? हाँ हाँ मैम, सर मेरा लॉ है बस, लेकिन अच्छा, मैं law। बस्ती में हूँ, पोस्टेड बस्ती में हूँ, घर मेरा लालगंज है। अच्छा अच्छा अच्छा, दुनिया बहुत छोटी है, सब एक दूसरे के आसपास के ही हैं। मैम कोई कन्नौज के आसपास का है? डर से नहीं बताएंगे क्योंकि अतर भेजना पड़ेगा। मैडम किस विभाग में है? यस मैम। से जो मैडम बोली है किस विभाग में है? रश्मि जी लॉ डिपार्टमेंट बोलिए, लॉ डिपार्टमेंट। बस्ती में पोस्ट हुई, पीएनपी कॉलेज बस्ती। बस्ती में सनशाइन पीजी कॉलेज। चला जाए, अब मिलते हैं 11 बजे एग्जाम में। तैयार हो गया। ठीक है, कुछ खा पी लिया जाए, कुछ खा के एग्जाम दिया है। एग्जाम तो खा पी कर ही दिया जाता है ना। आज रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही है, हमारी खाइए। स्ट्रेटेजी नहीं जा रही है कि हम लोग एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। और राघवेंद्र सर कहाँ से हैं आप? सर मैं कन्नौज से हूँ। अच्छा, हाँ, कन्नौज में रहने वाला हरदोई से हूँ सर, मैं हरदोई से। ये राघवेंद्र जी। यस सर। ये छिबरामऊ में जो नेहरू पीजी कॉलेज है। यस सर, मैं नेहरू पीजी कॉलेज में हूँ सर। हाँ, डॉक्टर उदयपाल सिंह है सोशोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत ही खास परम मित्र हैं सर वो हमारे बड़े खास है, और हमारे वो साथ हॉस्टल में रहे थे। अच्छा सर, अरे सर। हाँ, मेरा नाम अतुल यादव है, मैं फिजिक्स में हूँ मेरठ कॉलेज में। और उदयपाल जी हमारे सीनियर भी हैं, कैंपस में यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ ही हॉस्टल में रहे थे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन सर, बहुत हाँ, नहीं वो बहुत बता रहे थे इन्होंने कहा राघवेंद्र जी है, मैंने कहा हाँ राघवेंद्र जी हैं, तो मैंने बताया था उन्हें। यस सर। तो इस समय आप कहाँ पर हैं सर? कभी उदयपाल जी के साथ मैं मेरठ कॉलेज में हूँ। अच्छा, हाँ मेरठ कॉलेज आपने बताया। मेरठ कॉलेज बहुत बड़ा है सर। हाँ जी, वो तो खैर काफी बड़ा कॉलेज। आपके कॉलेज में प्रिंसिपल वाला भी प्रकरण चल रहा था ना सर? हाँ, वो प्रकरण चल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। पूजा मैम, आज अच्छा लगा। ठीक है, आप कहाँ पे हैं? मैम हम भी मेरठ में हैं सर। अभी जो बता रहे हैं सर के कॉलेज की हैं मैम, वो अभी प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, डॉक्टर अलका चौधरी। अलका चौधरी। आप मैडम किस डिपार्टमेंट में? सोशियोलॉजी में। अच्छा, जियोलॉजी में। सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी। जी। सोशियोलॉजी नहीं। अच्छा। पूजा मैम कानपुर से है? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। क्या सर? राघवेंद्र जी का मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस। क्या सर? मेरी आवाज शायद क्लियर नहीं आ पा रही है। नहीं, पूजा मैडम जो है वो सोशियोलॉजी की है और कन्हौरलाल पीजी कॉलेज में है। अच्छा, यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर दिग्विजय जी कन्हौरलाल में है मैडम। अच्छा। तो मैडम कहाँ की रहने वाली हो पूजा मैडम? सर हम गाजीपुर के हैं, पोस्टेड मेरठ में है। अच्छा, गाजी। जी। सब लोग आसपास ही हैं, जौनपुर मेरठ, ये क्या बोले, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर। जी। मैडम अपने क्षेत्र पूर्वांचल की है। हाँ सर, वहीं के हैं, बस पोस्टेड यहाँ पे हैं। पढ़ाई लिखाई सब इधर ही से हुई है। अभी पीएचडी मेरी बीएचयू से कंप्लीट हुई। जी। गाजीपुर कहाँ पे है मैडम? गाजीपुर सर उधर हावरपुर साइड में है हमारा गांव। जी। चलो तो भाई फिर मिलते हैं एग्जाम में। चलो ठीक है फिर है।
ओके।